I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? जॉर्ज मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. अच्छा ये जॉर्ज मिनिस्ट्री में है. ओके. Have you seen this? न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं. किसी रैनरॉक नाम के गॉब्लिन ने विद्रोह कर दिया. अच्छा. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. जॉर्ज बता रहे कि रैनरॉक गॉब्लिन बड़ा खतरा है. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. रैनरॉक गॉब्लिन से बचाने के लिए ना ये गॉब्लिन मेटल फिग की वाइफ मिरियम ने मरने से पहले जॉर्ज को भेज दिया था और इसके ऊपर जो चमक है ना सिर्फ रॉकी को नजर आ रहा है. Merlin's beard. How did you wait? रॉकी ने खोल दिया इसको. We do. ओए! ड्रैगन खा गया जॉर्ज को. भाई साहब. जॉर्ज अब पक्का मर गया है. मौत को करीब से देखा जीव नजर आने लगे. मां कसम. ड्राइवर भी गया. गॉब्लिन मेटल को जैसे ही खुला ड्रैगन ने अटैक किया है. कुछ लेना देना है. इसके अंदर से चाबी निकली. ड्रैगन आ रहा है. बाल बाल बचे प्रोफेसर फिग और रॉकी, लेकिन जॉर्ज डेफिनेटली मर गए. तो प्रोफेसर फिग की वाइफ मिरियम ने ना रैनरॉक की हरकतों के बारे में मिनिस्ट्री को बताया था. क्या अटैक रैनरॉक ने करवाया था क्या? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. तो मुझे सिखाया जा रहा है कि हेल्थ जब कम हो तो क्या करना है. तो हेल्थ बार मेरी नीचे बनी हुई है जो कि बिल्कुल लो है. फिग ने ये विगनवेल्ड पोशन दिया है जिसको मैं पीऊंगा, हेल्थ रिकवर हो जाएगी और आगे भी ऐसा ही करना है. ठीक है. What happened? Poor George. I can't believe he... फिग को बुरा लग रहा है अपने दोस्त के लिए. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. तो गॉब्लिन मेटल के अंदर से जो चाबी निकली थी ना उसको बोला जाता है पोर्ट की. ये एक तरह की जादुई चाबी है. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
तो पोर्ट की को बनाने वाला ना उसकी जगह भी डिसाइड करता है, यानी कि पोर्ट की को जो भी छुएगा वो किस जगह पहुंचेगा ये पोर्ट की पे जादू करने वाला डिसाइड कर लेता है। इसलिए प्रोफेसर फिग ने बोला कि थोड़ा संभल कर यहाँ पर छानबीन करते हैं, क्योंकि पता नहीं कि किसने ये पोर्ट की बनाया और क्यों बनाया है। और फिग ने ये भी बोला ना कि ड्रैगन ऐसे किसी पे अटैक नहीं करता है, यानी समझ हो ना, कुछ तो झोल है। How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. तो पोर्ट की बनाने वाला चाहता था कि वो जो टूटी फूटी हुई बिल्डिंग है ना उसके अंदर जाना अपने को। कितनी खूबसूरत जगह है नहीं? Mind your step. और फिग ने बोला है कि मेरी वाइफ और अब जॉर्ज दोनों मरे इस चाबी की नॉलेज का पता करते हुए, इसलिए हम दोनों को खंडर में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये चाबी अपने को कहां ले जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव मेरा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, फॉलो प्रोफेसर फिग। ओके, Steady yourself. Reparo. मतलब फिग ने रिपेयरो करके रिपेयर कर दिया है, लेकिन झाड़ू मिलता तो और अच्छा लगता। कोई बात नहीं, आगे की गेम में मिलेगा, मैंने ट्रेलर में देखा है। Almost there. पोर्ट की को बनाने वाला यहाँ लाना चाहता था, यहाँ है क्या? Why would someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. तो पोर्ट की यहाँ पर लेकर आई है तो उसकी कुछ तो वजह होगी, इसलिए प्रोफेसर फिग ने बोला है कि आसपास देखो, कुछ भी अजीब लगे तो उसको इंस्पेक्ट करो। ओके, तो मेरा मिनी मैप भी बन चुका है, साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। मिनी मैप की बिना बिल्कुल मूवी टाइप का लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि गेम खेल रहा हूँ, लेकिन अभी भी मूवी टाइप का दिख रहा है। नहीं, इन्वेस्टिगेट करना है स्टैचू को। Professor, this statue... This may have been his home. प्रोफेसर फिग ने बोला कि ये जिसके स्टैचू है ना उसी का घर होगा। अपने घर में अपना स्टैचू बनवा लिया, वाह। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही छोटा सा जादू है जिससे ये पॉट सब टूट जाते हैं, लेकिन आगे फाइट करने के लिए अच्छे जादू सीखने होंगे। फिलहाल यहाँ इन्वेस्टिगेट करना है, ऐसा तो कुछ लग रहा नहीं है। ये क्या है? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. तो प्रोफेसर फिग बता रहे हैं ना, जिसका ये घर है, जिसका स्टैचू बना हुआ है, वो फ्यूचर भी देख सकता था और उसी ने ये दीवार पर म्यूरल बनाया होगा, यानी कि फ्यूचर बनाया होगा अपना, जो भी है। कुछ और भी आगे इन्वेस्टिगेट करने का दिख रहा है, लेकिन आगे जाए कैसे? कोई सीक्रेट दरवाजा है क्या यहाँ पर? ऐसा तो कुछ नहीं है, वरना फिग बता देते आगे से जाने का कोई रास्ता होगा। अभी तक हॉगवर्ट्स पहुंचे भी नहीं और इतना मजा आ रहा है। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद क्या होगा? एक ही जादू आता है, लेकिन करने में बहुत मजा आ रहा है। That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! तो रॉकी को ये कुछ मिल गया, ये क्या है? फिर से वो चमकता हुआ स्टोन, जैसा ये गॉब्लिन मेटल पर नहीं था वैसा ही ये यहाँ पर अंदर किसी तरह का खुफिया रूम दिख रहा है। How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. प्रोफेसर फिग को रूम नजर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? इन्वेस्टिगेट करना है मुझे, ठीक है? What in Merlin's name? इस चमक को सिर्फ रॉकी देख सकता है और अनलॉक कर सकता है। Godric's heart. Where are we?
I don't believe it. प्रोफेसर फिग को यकीन नहीं हो रहा है। गॉब्लिन सोया हुआ, अरे ये बैंक में आ गए हैं क्या? गॉब्लिन बैंक में। तो अभी ऑब्जेक्टिव है उस सोए हुए गंदे खराटे मारते हुए गॉब्लिन को जगाना है, ठीक है? Hello? घोड़े पे क्या सो रहा है भाई ये तो। अब उठ भी जा। गॉब्लिन सबका रोल बहुत अच्छा था मूवीज में। It can't be. गॉब्लिन बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ग्रिंगॉट्स जादुई बैंक है, मुझे लगा ही था। Vault number 12, I presume. Precisely. बोल रहा है कि वॉल्ट नंबर 12 में जाना है ना आपको। The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. अच्छा, तो वो चाबी वॉल्ट नंबर 12 की है इस बैंक में। This way, then. वॉल्ट नंबर 12 के अंदर कुछ तो खास है। Stay close. After you. ट्रेन भी आ गई भाई। इतनी मूवीज की याद आ रही है ना मुझे। मैं गेम खत्म करके मूवी देखने जा रहा हूँ, लेकिन मूवी में हाथ में लैंप लिया रहता था, इसमें लाइट लगी हुई है, ठीक है? Keep your hands inside the cars if you don't wish to lose them. गॉब्लिन ने बोला कि अगर हाथ कटवाना नहीं चाहते हो तो हाथ अंदर ही रखना, ठीक है? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. इस बैंक में प्राइवेट एंट्रेंस सिर्फ अमीर या ताकतवर लोगों को मिलता है। You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. तो वॉल्ट नंबर 12 400 साल पहले बनाया गया था जब ये बैंक बन रहा था, और जिसका भी ये वॉल्ट था वो या तो बहुत अमीर था या उसके पास बहुत ताकत थी, या दोनों था, तब उसको ये प्राइवेट एंट्रेंस मिला है। Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. गार्ड ऐसा क्यों लग रहा था कि मारने वाला है मुझे? ये गार्ड पीछा कर रहा है या साथ में चल रहा है? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. रॉकी बता रहा है ना कि गार्ड के हाथ में जो बैंड बंधा हुआ था ना, उसमें वही काली चमक थी ना जो ड्रैगन के कॉलर में थी। यानी कि उस ड्रैगन को और इस गार्ड को एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है। Here we are. इतना मार हो रहा है वॉल्ट नंबर 12 के लिए, इसके अंदर है क्या ऐसा? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. गॉब्लिन बता रहा है कि 100 साल से ऊपर हो गए इस वॉल्ट के अंदर कोई नहीं आया है आज से पहले। Vault 12. Thank you for your help.
हैरी पॉटर में एक वो कप वाला याद है वॉल्ट के अंदर जो हुआ था कि एक कप को छू के 2 हो जाएगा, 2 का 4, 8 ऐसे बढ़ते रहेंगे, वैसा कुछ होने वाला है क्या? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. अरे ये क्या बात हुई? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. तो वॉल्ट के मालिक ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था बैंक को कि जिसके पास भी चाबी है उसको अंदर भेजो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। यानी कि अब यहाँ पर जो भी सीक्रेट है ना उसको खुद से रिवील करना होगा और उसके लिए अपने को मैजिक करना होगा रिवीलियो, जो कि अभी मैं करने जा रहा हूँ। तो रिवीलियो जादू मैंने अनलॉक कर लिया, यहाँ पर जो भी है वो रिवील हो जाएगा। ओके। Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. रॉकी को कुछ नजर आया वहां पर, तो आगे चलकर फिर से रिवीलियो करना है। ओके। A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. तो फिर से चमक दिख रही है सिर्फ और सिर्फ रॉकी को, और रॉकी अंदर ले जा सकता है। देखते हैं वॉल्ट का रहस्य क्या है। ये तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया है, नहीं? Lumos! ओ, खतरनाक, थड़ी फ्लैशलाइट बन गई है। This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. तो प्रोफेसर फिग ने बोला ना कि ये कोई मामूली वॉल्ट नहीं है, तो इस वॉल्ट में एक तरह का टेस्ट होगा अपना, और टेस्ट अगर पास करते हैं तभी दोनों बाहर निकल पाएंगे, वरना यही अटक के रह जाएंगे और पता नहीं क्या होगा दोनों के साथ। प्रोफेसर फिग, मुझे भी बता दो ये छड़ी में फ्लैशलाइट कैसे बनाना है? दोनों के पास रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ये ग्लो सिर्फ रॉकी को क्यों नजर आ रहा है? रॉकी के पास कुछ स्पेशल पावर है क्या? इसके अंदर से गाने की आवाज आ रही है। What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? फिग को स्टैचू नजर नहीं आ रहा है। I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. स्टैचू की सिर्फ परछाई दिख रही है जमीन पर, तो रिवीलियो कर सकते हैं जिससे स्टैचू रिवील हो जाएगा। Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ओके, तो मेरी छड़ी भी फ्लैशलाइट बनने वाली है क्योंकि मुझे लूमस तैयार करना है। फिग को स्टैचू नजर आ रहा है लेकिन उसकी परछाई नजर नहीं आ रही है, और ये परछाई लाइट के साथ घूमती है। तो सबसे पहले तो लूमस किया जाए। ओके, R2 और ट्रायंगल। Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. परछाई को ना स्टैचू के साथ मैच करना है, ठीक है? इन सब की भी परछाई सेट करनी है क्या? अरे ये भी टेस्ट है, हमला कर दिया इसने।
प्रोटी को नया जादू मिला है जिससे प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। अरे स्टूपिफाई, ये जादू मुझे याद था। मेरे सारे जादू तो बेसिक थे, प्रोफेसर फिग के कितने खतरनाक जादू थे, नहीं? Lumos. ऑफिसर गायब हो गए। अरे Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? ये लाइट मुझे कहीं लेकर जा रही है। What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. परछाई सेट करूंगा फिर हमला कर देंगे। प्रोफेसर फिग पता नहीं कहां चले गए हैं। सबसे पहले रिवीलियो किया जाए। Revelio. I suppose I'm on my own this time. रॉकी बोल रहा है कि इस बार अकेले हैंडल करना होगा, ठीक है। 3 परछाई सेट करनी है, एक तो हो गई। लाइट के साथ इनको घुमाना है, ठीक है। अरे उसको सेट तो किया था, ये क्या हुआ? अच्छा, तीनों को एक साथ सेट करना है। ओके ओके ओके। It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out. I need to align these statues with their reflections. अकेले फाइट करना होगा, तैयार? अच्छा, ज्यादा लंबा होल्ड करके नहीं रख सकता प्रोटी को, ठीक है, याद रखूंगा मैं। प्रोटीगो को होल्ड करने से दुश्मन स्टंट हो जाएंगे और काउंटर अटैक कर सकता हूं, और स्टंट दुश्मन पे ना ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है। भाई साहब, इसमें बॉस फाइट होगी, मजा आ जाएगा। ये आखिरी था, टेस्ट में पास कर गया क्या? बोल दो कि मैं टेस्ट पास कर गया हूं। तो ऑब्जेक्टिव है प्रोफेसर फिग को ढूंढना। ये लाइट मुझे लेकर जा रही है, ठीक है। अभी स्प्रिंट करना सिखाया, हाँ, इतने देर बाद। जादुई मिरर जिसके अंदर कमरा है। Lumos. प्रोफेसर फिग को अभी भी ढूंढना है। मिरर के अंदर जाना सेफ है? चलो देख लेते हैं। अंदर से अजीब अजीब आवाज आ रही है, डर भी लग रहा है जाने में। इस साइड से घुसा तो कोई फायदा नहीं, इस साइड से घुसूंगा। कमरे में आ गया। Revelio. Lumos. किसी तरह का बॉक्स रखा हुआ है। चेस्ट, कॉइन्स मिले। अच्छा, बीच में कुछ रखा हुआ है, उसको देखा जाए। अच्छा, इसी में कुछ करना है। अरे ये वो मेमोरी वाला है क्या? किसी की भी पुरानी याद को उसमें डालकर देखा जा सकता है। वही है क्या? वैसे ही लग रहा है। There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. तो ये पेंसिव है जिसमें याद देखा जाता है, वही है। I wonder. तो इस वॉल्ट के अंदर ना इस याद को स्टोर करके रखा गया था। इसमें क्या है आखिर? Follow my lead.
कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद है। जिनकी मूर्ति नहीं बनी हुई थी खंडर में, वही है। इन्होंने ही ये पोर्ट की बनाया था। All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. तो इसके अंदर ना प्राचीन जादू के सारे रहस्य हैं और इस पोर्ट की को लेकर यहाँ तक वही पहुँच सकता था जो प्राचीन जादू के निशान को देख सकता है। यानी कि रॉकी को जो चमक नजर आ रही थी ना, वो प्राचीन जादू के निशान है। That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. फिग की वाइफ को पता था लेकिन उन्हें कभी नजर नहीं आया। Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. कोई खतरा आ रहा है अपनी तरफ। Who were they? I don't know, but sir, you shouldn't be in there. अरे वही गॉब्लिन रैनरॉक। I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. इस वॉल्ट में जो मिला इसको चाहिए। Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. बैंकर रैनरॉक को जाने बोल रहा है। Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't. अपना गुस्सा दिखा रहा है, ठीक है? I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. भाई साहब ये रैनरॉक ज्यादा पावरफुल है। इस वॉल्ट का रखवाला है क्या? रैनरॉक की वाट लगाने आया, खतरनाक। लेकिन रैनरॉक और उसके आदमी भी इसको संभाल ले रहे हैं भाई। रॉकी को बाहर जाने की जगह मिल गया, निकलो यहां से। वो गार्ड मनहूस मिला हुआ था। Are you all right? Fine, sir. अब कहां पहुंचे दोनों? I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. रैनरॉक के ऊपर फिग के जादू का कोई असर नहीं हुआ। Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both
wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. तो पोर्ट की बनाने वाले चाहते थे कि जिसके पास भी प्राचीन जादू को देखने की शक्ति हो, वो याद को देखने के बाद यहां पर आए। ओ भाई साहब, हॉगवर्ट्स आ गए। हॉगवर्ट्स की ट्रेन है। फाइनली हॉगवर्ट्स आ चुके हैं हम लोग। ओ भाई 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 भाई, खतरनाक स्टार्टिंग। ये है अपना हॉगवर्ट्स। अब शुरू हो रहा है हॉगवर्ट्स लेगेसी। वाह, स्टार्टिंग जितना अच्छा था, अगर उस टाइप का गेम है तो भाई बहुत मजा आने वाला है। अभी सॉर्टिंग सेरेमनी होने वाली, यानी कि अभी बोलती टोपी डिसाइड करेगी कि रॉकी किस हाउस में जाएगा। और मैं सच बताऊं तो मुझे ग्रिफिंडोरी में जाना है। कोई अगर दूसरा हाउस मिल गया ना, मैं बहुत निराश होने वाला हूं। Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Thank you, Fig. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? प्रोफेसर फिग ने बताने मना किया है कि अपने को चाबी मिली थी वॉल्ट की, और वॉल्ट के अंदर क्या क्या हुआ। Phineas, Nigellus, Black. इस प्रोफेसर का टाइटल ब्लैक है, यानी सीरियस ब्लैक के फैमिली के। Prepare yourself to meet the headmaster. अच्छा, तो ये हेडमास्टर है, यानी कि प्रिंसिपल है यहाँ के। Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. ये हेडमास्टर तो काफी चिड़चिड़े हैं। If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. रॉकी का भी सॉर्टिंग सेरेमनी हो जाएगा। चलो ठीक है। I'll be in touch. तो गॉब्लिन सारे विद्रोह कर रहे हैं, ये सबको अफवाह लग रही है। इसलिए प्रोफेसर ब्लैक ने भी बोला ना, मेरे पास टाइम नहीं ये सब अफवाह सुनने का कि गॉब्लिन ने अटैक किया, जो भी किया। और मैं बोलना चाहूंगा कि डंबलडोर जैसे अच्छे नहीं है हेडमास्टर, लेकिन ठीक है, कहानी थोड़ी अलग होनी चाहिए। ये हैरी पॉटर का बेटा है क्या? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. अच्छा, तो ये है हेड मिस्ट्रेस प्रोफेसर वीजली, जिन्होंने लेटर भेजा था। और अब प्लीज बोलती टोपी, ग्रिफिंडोर, उसके सिवा कुछ मत देना। Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. अच्छा, मैं चूज कर सकता हूँ किससे क्या बोलना है, और शायद वही डिसाइड करेगा मैं किस हाउस में जाऊंगा। तो मैं इसको बोलता हूँ ना कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा इस जगह को एक्सप्लोर करने का। I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? मेरे अंदर कुछ महसूस हो रहा है इसको। डेयरिंग, क्यूरियोसिटी, लॉयल्टी, एम्बिशन। डेयरिंग बोलता हूँ, तो रॉकी डरता नहीं है किसी से, डेयरिंग है बहुत। A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown.
willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. ग्रिफिंडोरी में भेजा, बोलती टोपी आई लव यू। अच्छा, तो कोई और हाउस में भी अगर भेजता ना तो मैं डिफरेंट हाउस सेलेक्ट कर सकता था। या तो ग्रिफिंडोर को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर अपना हाउस चेंज भी कर सकता हूँ। ये 4 हाउस हैं। स्लिदरिन लूंगा तो भाई मैलफॉय बन जाऊंगा। ना ना ना, रेवेनक्लॉ, हफलपफ नहीं, ग्रिफिंडोर ही ठीक है। Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor. मुझे सही में फीलिंग आ रही है कि मुझे ग्रिफिंडोर में सेलेक्ट कर लिया गया है। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर वीजली ने ग्रिफिंडोर का अटायर दे दिया है। चलो ठीक है, ये सारे ग्रिफिंडोर हाउस में हैं। Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. अरे नहीं, क्विडिच कैंसिल कर दिया। किसी को बुरी चोट लग गई थी उसकी वजह से। Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. झाड़ू पे उड़ सकते हैं, उसको बैन नहीं किया अभी फिलहाल, लेकिन क्विडिच कैंसिल कर दिया है। प्रोफेसर ब्लैक काफी खड़ूस है। Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. प्रोफेसर वीजली मुझे कॉमन रूम ले जाएंगी, ठीक है? As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. प्रोफेसर फिग भी बहुत अच्छे थे और प्रोफेसर वीजली से अभी 2 ही सेकंड बात किया है, लेकिन काफी अच्छी लगी। It's most uncommon for a student to begin as a 5th year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? पासवर्ड बताना होगा अंदर जाने के लिए। The password is Grata Domum. Grata Domum. अजीब सा पासवर्ड है। You may enter. प्रोफेसर वीजली भी ग्रिफिंडोर है और बोल रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहता था स्टार्टिंग में पासवर्ड। Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. तो कल पहले क्लास में ले जाने के लिए प्रोफेसर वीजली आएंगे मुझे। कोई इतना लेट से हॉगवर्ट्स ज्वाइन नहीं करता, वो भी डायरेक्ट 5th ईयर में। लेकिन रॉकी में कुछ तो खास है जो इसको डायरेक्ट 5th ईयर में ज्वाइन करवा लिया गया है, और इसलिए सारे टीचर्स और स्टूडेंट भी शॉक है कि ये डायरेक्ट 5th ईयर में कैसे आ गया। Looks like everyone's gone. Better head to the common room. तो हॉगवर्ट्स में अब अपनी मर्जी से मैं घूम सकता हूँ। वेलकम टू हॉगवर्ट्स। तो ये क्वेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, सारे लोग कॉमन रूम चले गए हैं, मुझे भी कॉमन रूम जाना होगा। अच्छा, इसमें भी सीढ़ी अपना मतलब जगह बदलेगी, याद है हमेशा बदलती रहती थी, इसलिए सीढ़ी को बोला गया था कि ध्यान से देखना। ऐसे जाना तो मुझे ऊपर है, लेकिन एक बार नीचे चलकर देखते हैं कि क्या है। बहुत बड़ा होगा हॉगवर्ट्स, आराम से घुमा जाएगा, साइड मिशंस बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन अभी ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जाना अपने को ऊपर ही है, कॉमन रूम ऊपर है। Now, which way is the common room? हॉगवर्ट्स पे कोई अटैक करेगा ना तो ये जितने भी नाइट्स है ना सब जिंदा हो जाएंगे। याद है ना डेडली हैलोस पार्ट 2? ओ पेंटिंग, अरे बहुत सही बहुत सही। वो हेडलेस आदमी मिलेगा या मायूस मीना, याद है वो बाथरूम में थी ना, वो हो सकता है वो भी मिले। Must be different starting Hogwarts in your 5th year. तो वो स्टूडेंट रॉकी से बोल रही है काफी अलग लग रहा होगा, 5th ईयर में तुमने स्कूल स्टार्ट किया है, अलग तो लग रहा है। ये क्या है, जो भी है एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। They're lucky they didn't end up as dragon fruit, like that poor man from the ministry. Can't imagine starting a new school this late. Don't fall off this time, Ellie.
तो सबको पता चल गया कि ड्रैगन ने मुझ पे अटैक किया था और मिनिस्ट्री के आदमी जॉर्ज को खा लिया और प्रोफेसर फिग और रॉकी बच गए। तो मुझे 3 स्टूडेंट से मिलना है, ठीक है? She gets bolder every year. That girl thinks she can get away with anything. Top her old records. Such a show off. Oh, what did I do wrong this time? तो क्रेसिडा ब्लूम से बात करनी है। I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ah! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? बोल रही है काफी शानदार एंट्रेंस की थी तुमने कल, और पूछ रही है कि मैंने सुना है कि प्रोफेसर फिग के तुम खास हो क्या? फिग ने मुझे पढ़ाया है, ये बोल देता हूँ। I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? क्रेसिडा को एडवाइस चाहिए। Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. बोल रही है कि तुमको तो प्रोफेसर फिग ने एडवाइस दिया होगा ना, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इसको मैं 3 में से कोई एक बात बोल सकता हूँ। क्या बोला जाए? इसको बोल देता हूँ कि मुझे यकीन है कि तुम ये जादू कर लोगी। Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. अगर इसने ये जादू कंप्लीट कर लिया तो कोई प्रोफेसर रोनन काफी इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इससे मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ, लेकिन नहीं, 2 स्टूडेंट से और मिलना है, तो इसको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, निकलता हूँ। Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. चलो अच्छा है, फर्स्ट दिन है, रॉकी का जान पहचान बना रहा है, 2 स्टूडेंट से और मिलना है। Broomsticks are so I hope a professor catches her Never this do time. anything for a thrill. ये नेली कहाँ चढ़ गई है? नेली गिर मत जाना, इससे भी मिलना है, ये जो ऊपर है। लेकिन पहले जो नीचे उससे मिल लेता हूँ। ये लड़के से मिलना, ओके? You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. अच्छा, ये लड़का भी वीजली है। Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. ड्रैगन अटैक के बारे में सबको पता है। Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. अच्छा, तो हेड मिस्ट्रेस वीजली इनकी आंटी है। तो इससे 3 में से कोई एक बातें बोल सकता हूँ। तो इसको बोलता हूँ कि अच्छा है ना, तुम्हारी आंटी प्रोफेसर है यहाँ पर। Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. बोल रहा है कि आंटी मेरे ऊपर काफी कड़ी नजर रखती हैं, लेकिन वो मेरा भला चाहती हैं इसलिए, और काफी पावरफुल जादूगर है वो, ठीक है? Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. अब आखिरी स्टूडेंट से मिलना है, वो नीली जो ऊपर करतब दिखा रही है, पता नहीं क्यों, इससे मिलना है। Don't fall off this Hope the time, professor Nelly. catches her this time. नीली थोड़ा नीचे होगी, मिलूं कैसे इससे? I don't want to get you weren't born with wings, Nelly. I'm sure you'd use them. That girl thinks she can get away with anything. नेली बात करनी है, नीचे आ जाओ। Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? तो ये बिना झाड़ू के बड़े बड़े टावर पे चढ़ जाती है, बहुत बढ़िया। और ड्रैगन के बारे में पूछी कि सही है या नहीं। हाँ, सही बात है, जो सुना है। Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. बोल रही है कि तुम्हारे आने से ग्रिफिंडोर में और खास करके हॉगवर्ट्स में काफी एक्साइटमेंट आ गई है। इससे एक सवाल पूछ ही लेता हूँ,
कि सबको क्या पता है मेरे यहाँ आने के बारे में। What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. बोल रही कि सब बोट और ट्रेन से आते हैं हॉगवर्ट्स और तुम ड्रैगन के मुंह से बच कर आए हो, तो बातें तो होंगी ही। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. तीनों से जान पहचान कर ली, अब क्या करना है? New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. तो किसी ने बोला कि प्रोफेसर वीजली मेरा बाहर इंतजार कर रही हैं, मुझे क्लास में ले जाने के लिए आई हैं। तो ये सारे क्लास में नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ही जाना है अकेले। Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. मेरा एग्जाम भी होने वाला है स्कूल में, वाह। भाई साहब ये क्या था? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. तो जो भी मैं सीखूंगा ना इसमें स्टोर होता जाएगा। जल्दी से जल्दी मुझे 5th ईयर के सारे स्टूडेंट्स के साथ कैच अप करना है। Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. तो प्रोफेसर वीजली ने बताया कि ये फील्ड गाइड कैसे काम करता है, ये अभी मेरे साथ चलो देख लेना। This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ये पूरे हॉगवर्ट्स का एक तरह से मुझे गाइड मिल गया है ताकि मैं 5th ईयर के स्टूडेंट के साथ compete कर पाऊं। I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. प्रोफेसर वीजली बोल रही है कि जब मैं स्टूडेंट थी ना, तब मुझे ये फील्ड गाइड मिल जाती तो कितना ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए। The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. तो प्रोफेसर वीजली ने मुझे रेवेलियो मैजिक करने बोला है, ठीक है? Revelio. अब इस पेंटिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, गाइड मुझे बता देगी। तो ये पेंटिंग है एक जादूगर बरूफियो की, और ये पेंटिंग एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप जादू करते टाइम गलत वर्ड बोल दोगे, जैसे इसने एस की जगह एफ बोल दिया था, तो इसकी छाती पर एक बफलो आकर बैठ गया। तो इसलिए जादू करते टाइम गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना है, सारे वर्ड्स सही से बोलने हैं, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फील्ड गाइड काफी काम की है, इंफॉर्मेशन मुझे देती रहेगी। तो फील्ड गाइड चैलेंज मैंने अनलॉक कर दिया है और उसमें मैं अपना प्रोग्रेस भी चेक कर सकता हूं कि चैलेंज मैंने कितना कंप्लीट किया है। तो सबसे ऊपर में मेरा पावर और लेवल दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियसली अभी 1 है, अभी तो शुरू ही हुआ है। ये क्या है? ये चैलेंजेस का प्रोग्रेस भी दिखाएगा फील्ड गाइड, ओके, और कुछ और बहुत कुछ है इसमें, इन्वेंटोरी भी है, क्वेस्ट भी है, तो ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं फील्ड गाइड से। गाइड पेज में जब भी कलेक्ट करूंगा ना, तो नए चैलेंजेस अनलॉक होंगे। जैसे जैसे मैं चैलेंजेस कंप्लीट करते जाऊंगा, हार्ड होते जाएंगे चैलेंजेस आगे जाकर, और उनको कंप्लीट करने पर अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। यानी कि साइड मिशन है, इतना समझ लो, इतना क्या है। Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. तो प्रोफेसर वीजली ने बोला है कि अपनी आंखें खुली रखो, और इस टाइप का कोई भी चैलेंजेस तुम्हें कैसल के अंदर भी मिल सकता है, बाहर भी मिल सकता है। No time to waste. You've classes to attend.
प्रोफेसर वीजली ने बोला कि टाइम वेस्ट मत करो, क्लास चलना है, चलो। क्लास में पक्का बहुत अच्छे जादू सिखाए जाएंगे जो कि अच्छे से याद रखना होगा। देखते हैं, अभी तो क्लास अटेंड करने जा रहे हैं भाई। फर्स्ट क्लास क्या होने वाला है? Lumos. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. तो कुछ फ्लू फ्लेम्स यूज करना सिखा रही है प्रोफेसर वीजली, वो क्या है? अच्छा, मतलब मैं समझ गया, एक तरह से शॉर्टकट है। मेरे गाइड के अंदर पूरे कैसल का मैप है, तो यानी कि फ्लू फ्लेम यूज करके मैं एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जाऊंगा। ये शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन रख दिया है ना, ये बहुत अच्छा किया, वरना एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो शॉर्टकट दिया है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन जब मैं नई लोकेशन पे जाऊंगा वहां पे फ्लू फ्लेम ढूंढ कर निकालना होगा, तब वो शॉर्टकट अनलॉक होगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अभी कहां जाना है? तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेंट्रल हॉल की तरफ है। ओके, इसमें जाना है, ठीक है। तो फ्लू फ्लेम का यूज करके कुछ ज्यादा ही जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. तो अब इन सीढ़ियों से सेंट्रल हॉल में जाना है। ओके, You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. सेंट्रल हॉल से हॉगवर्ट्स में किसी भी लोकेशन पे मैं जा सकता हूं। That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. तो 2 क्लास मुझे आज अटेंड करना है, और जो भी मैं ला रहा था ना, वो ड्रैगन ने तो सब तबाह कर दिया है। तो हॉग्समीड जाकर मुझे वो सप्लाईज लेकर आना है। डार्क आर्ट से कैसे बचे ये पूछते हैं। Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. तो कोई प्रोफेसर हेकट डार्क आर्ट से कैसे अपने आप को बचाना है वो सिखाएंगे। ओके, थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं क्लास के लिए जा सकता हूँ। Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. प्रोफेसर वीजली को शक है कि जब ड्रैगन ने अटैक किया ना, उसके बाद हमने क्या किया था। तो प्रोफेसर फिग ने झूठ बोल दिया कि जो सप्लाईज खो गया था ना, उसको रॉकी और फिग ढूंढ रहे थे, और प्रोफेसर फिग ने मुझे बताने मना किया है। तो ऐसे तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, प्रोफेसर वीजली अच्छी हैं, लेकिन ऑप्शन है नहीं अपने पास, सॉरी। I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. इनको शक हो गया है। Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. प्रोफेसर वीजली समझ गई, कुछ तो छुपा रहे हैं हम दोनों। Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. तो दोनों क्लासेस कंप्लीट करने के बाद प्रोफेसर वीजली से मिलना है और फिर वो साइड असाइनमेंट्स के बारे में भी बताएंगी और मुझे फिर वो हॉगमीड्स भी भेजेंगी जहां से मुझे अपने सप्लाईज लाने हैं। और अभी ऑब्जेक्टिव है प्रोफेसर फिग से बात करना है। प्रोफेसर फिग ने बोला था कि वो लॉकेट के बारे में और पता लगा के मुझे बताएंगे, तो हो सकता है कुछ पता लगाया हो उन्होंने, पूछा जाए। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? फिग बोल रही कि मैंने अभी सुना कि तुमने चालाकी से झूठ बोला प्रोफेसर वीजली को और तुम बच गए, तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा उनसे झूठ बोलकर। I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. तो फिग ने बोला कि पता नहीं हम किस रास्ते पे निकल गए, वो अपने को कहां लेकर जाएगा, और अगर तुम प्रोफेसर वीजली को सच्चाई बता देते हो ना, तो वो हेडमास्टर को बता देंगी। इसलिए अभी बात हम दोनों के बीच में रहे यही ज्यादा अच्छा है। तो फील्ड गाइड में ये जो मैप है उसमें मेन क्वेस्ट का सिंबल ये वाला है, ओके। और बहुत सारे मेन क्वेस्ट ना लॉक भी रहेंगे, जिनके लिए या तो अपना लेवल बढ़ाना होगा या कोई स्पेसिफिक स्पेल चाहिए होगा। यानी कि समझ लो कि बहुत सारे साइड मिशंस में हमेशा नहीं ना कर पाता हूँ, इसमें करने पड़ेंगे, तब बहुत सारे मेन क्वेस्ट अनलॉक होंगे। तो 2 मेन क्वेस्ट है, दोनों में से कोई एक भी चुन लेता हूं। The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. तो प्रोफेसर वीजली ने ऑल द बेस्ट बोल दिया अपना क्लास करने के लिए और बोला है कि अच्छे से सीखना। पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जब मैं हॉगमीड्स जाऊंगा ना, तो वहां पर मुझे खुद की न्यू छड़ी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा है। मेरा लेवल भी 2 होने वाला है। बहुत ज्यादा मजा आया भाई इस गेम में, और मतलब अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो चलो आज के एपिसोड यहीं पर खत्म करते हो। और भाई अगर आपको पसंद आया हो तो पक्का लाइक करना। अगर बहुत सारे लाइक्स आए तो इसकी वीडियो डेली आएगी भाई। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।